Now let's move to Cp at constant pressure. So again, I'll start with the same equation. dq is du plus dw. dq मतलब ncp delta t is the heat. right. du अभी हमने पढ़ा f/2 nr delta t. Fine. Plus dw work done, that is pdv. Work done is p delta v in a constant pressure process. कल के क्लास में हमने ये डिराइव किया था. So ये जो हो जाएगा p delta v, so I can also write this as nr delta t. pv equals to nrt. So this is nr delta t. So delta t n delta t n delta t n gets cancelled out, and cp is equal to f/2 r plus r. That gives me cp का वैल्यू जो मुझे मिलता है वो होता है f plus 2/2 into r. This is cp. 8/2 atomic. This is 3/2 r हो जाएगा. 5/2 cp हो जाएगा 5/2 r. This is 5/2 r, 7/2 r, 5/2 r, 7/2 r. और पॉली एटॉमिक क्या हो जाएगा? 6/2 r and 8/2 r, मतलब 3 r and 4 r. This table is very important. आपको याद रहना चाहिए Cv and Cp for different gases, because जब भी हमें हीट कैलकुलेट करना होगा at constant volume और at constant pressure for different gases, तो हमें चाहिए होगा ये. ठीक है? So we have calculated this. See, if you see here, then you will realize that Cp is greater than Cv. You will also realize that Cp minus Cv is equal to R. This is called as Mayer's formula. Right. ठीक है, पता था ये? मुझे काइंड ऑफ दिख गया था उसके जब लिख रहा था. Okay. ठीक है. So these are the terms that I have told you about. Cp and Cv, ये सब हमें पता चल गया.